whatever the things we have studied in first sem, no, it is totally for application. Though basic properties we studied, we use those applications in foundation engineering. So what matters most important is here is we should know much about foundation engineering. Now the question arises, what is the foundation? What is foundation? The thing is, so this is the ground level. Above the ground level, we see all these structures, buildings, roads, dams, bridges, tracks. All these things are called superstructures. Whatever the structure, suppose a building is there, so that portion of building above the ground level is called superstructure. This portion is called superstructure. So the superstructure is mainly in case of building consists of walls, then floor, roof, then doors, windows. So completely all these will constitute superstructure. So this is the dead load. Whatever the load of this superstructure will be there, this is the totally static at one point only. But the thing is, apart from this, some live loads will be there. So some people will come in your home and again they will go. Okay, some monkeys will come on your roof. Okay, some birds will fly, people will come. So all these things, even if a road is there, means people will travel from here to there. All these loads are live loads. So apart from weight of the superstructure, live load will be there. So this weight of the superstructure, this live load, plus apart from these two loads, suppose the building is very high. So windy area is there. So then whatever the load here comes is called wind load. It is called wind load. Then apart from this, snow load. Suppose if it is in the snowy area like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. Then suppose if it is in the earthquake prone area, then it is seismic loads. So apart from its superstructure load, that is dead load, plus live load, for different types of loads will act on this building. When so much loads, so much forces will act on this building and it is already having its own weight, so this entire load will be transferred to the ground. And from the ground, below the ground, the load is transferred. So whatever the position is there, what is the structure is there below the ground, which supports this superstructure with its loads, live load and all these loads. So it is called foundation. What it is called? It is called foundation. तो याद रखो, फाउंडेशन वो पार्ट है जो सुपरस्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है. जनरली फाउंडेशन के बारे में हमको कम पता रहता है because we see all the superstructure parts only. So whenever we think about the building, just what will come in your mind? That is doors, windows, all these things will be there in your mind. But you never know about foundation. Foundation is the hidden part, but foundation is the main part. If your foundation is good, well and enough, if it is stable, then only it is going to support the superstructure. Then it is going to support only the superstructure. Suppose if this foundation is weak. This foundation is weak. Load is more than whatever the power, supporting power of soil is there. Then the soil building is going to collapse. The building is going to fail. The building fails by two methods. The building fails by two methods. The building fails by two methods. One is by shear. One is by shear. Another is by settlement.
one is by shear, another by settlement. तो दो तरीके से आपका बिल्डिंग फेल हो सकता है, by shear and by settlement. Now the thing is, the foundation soil should have sufficient power to support this superstructure. To support this superstructure. So that is called bearing capacity. It should not fail in shear, it should not fail in settlement. So whenever the loads will act, definitely building will settle, but there is some limit is there. So it should not cross that particular limit. It should not cross that particular limit. Got it? So this is all about the foundation. फाउंडेशन हार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन द फाउंडेशन इज वीक, द सॉइल इज वीक. So there are two types of foundation. One is shallow foundation, another is deep foundations. So what are these? All these things in subsequent chapters I will explain in detail. So as far as possible, the building should have shallow foundation. Why it is so? Sir, why you are preferring shallow foundation comparing to deep foundation? It is because in case of shallow foundation, it is economical. The cost is very less. Deep बोल तो आपको बहुत deep जाना पड़ता है. Then what the thing is, we have to adapt as far as possible shallow foundation only. As far as possible, shallow foundation only. Shallow foundation only. So in case of shallow foundation only, तो अगर से shallow foundation sufficient नहीं है, so then you go for deep foundation. लेकिन बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाए, मतलब आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है डीप फाउंडेशन के लिए. इसीलिए क्या करना, हम सॉइल को ट्रीटमेंट करना पहले. अगर से आपके लोड्स ज्यादा नहीं है, अननेसेसरी आप डीप फाउंडेशन को जा रहे, देन देयर इज वेस्टेज ऑफ मनी. आप पहले ये देखो कि shallow foundation is sufficient enough to support your superstructure. If it is sufficient, it is well and good. If it is not so, you have to go for deep foundation. But before going to deep foundation, that is before deciding that we will go for deep foundation, what you have to check that, can we improve this soil so that it can support the superstructure? Of course, now it is not, in a position to support the superstructure. अब ये ऐसे हालात में नहीं है कि सुपरस्ट्रक्चर को ये सपोर्ट कर सके. बट ऐसे कुछ टेक्निक्स है. These techniques are called ground improvement techniques. कभी आप कॉम्पैक्शन करते, कभी कोई लाइन मिलाते, ऐसे अलग अलग मेथड्स है. सो सॉइल ड्रेनिंग करते, सॉइल नेलिंग करते. सो सच मेथड्स, by using such ground improvement techniques, this bearing capacity of soil can be increased. अगर से हम ये सब टेक्निक यूज करे बाद अगर से सॉइल इंप्रूवमेंट हुआ और इट इज एबल टू सुपरस्ट्रक्चर अगेन, देन देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर डीप फाउंडेशन. रिमेंबर, then there is no need of going for deep foundation. So you have to go for deep foundation only when ground improvement technique also fails. Ground improvement technique also fails. So this is all about foundation. So foundation plays a very, very, very important role in any construction. आपका just the in common words also we use the term, आपका foundation मजबूत होना चाहिए. Studies also we say, no, when you go for 12th or degree or something, if your foundation is very strong, you can grasp the things very easily. Means if you have studied well in your 1 to 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, then in college level it will be very easy. What does it mean by this? This means that you should have sufficient knowledge in the basic itself. So same thing is here. So if your foundation is good, everything is good. If your foundation will weak, then definitely there will be cracks in the building. The building may settle down wholly. कितने बिल्डिंग धस जाते आप देखे होंगे, हल्लू 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 होते एक दिन पूरा धस जाते. कितने बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते. Why it is so?
or it is because of the weak soil, or it is because of weak soil. Got it? The things are clear. So what is superstructure, what is ground level, what is foundation, and what is foundation soil? Whatever the soil available in the upper portion here, it is called foundation soil. It is called foundation soil. Now the question arises, sir, what is footing and what is foundation? So देखो यहाँ पर definition है. A footing is a portion of the foundation of a structure that transmits loads directly to the soil. A footing is a portion of the foundation of a structure that transmits loads directly to the soil. मतलब क्या है? फुटिंग फाउंडेशन का वो पोर्शन है, मतलब फुटिंग फाउंडेशन का पोर्शन है. समझ रहे आप? सिविल डिपार्टमेंट ये जो है स्वेरी का एक पार्ट है, मैकेनिकल अलग है. वैसा ही फुटिंग क्या है? ये फाउंडेशन का एक पार्ट है, और ये जो है लोड डायरेक्टली सॉइल को ट्रांसफर करता है. कैसा है? देखिए यहां पर मैं आपको बताया, दिस इज द सुपरस्ट्रक्चर. सपोज करिए एक वॉल है. तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये नीचे ये फाउंडेशन है नीचे, तो यहां पर एक फुटिंग देता हूं, मतलब इसी के विड्थ का, इसी के थिकनेस का एक और नीचे वॉल लेता हूं, थिकनेस लेता हूं, और इसको नीचे क्या करता हूं, उल्टा टी के जैसा स्प्रेड करता हूं. When practice sessions, most probably after 15th practice sessions may start, so at that time I will explain the things which I cannot do here. Okay, the thing is, so this wall, ये wall का जो load है ये evenly ट्रांसफर होना, इसीलिए हम फुटिंग को नीचे क्या करते, वेट देते. इट इज गिवन वेट हियर, सो दिस इज कॉल्ड फुटिंग. सो फुटिंग क्या है? फाउंडेशन का वो पार्ट है. फुटिंग इज part of the foundation which transfers loads directly to the soil, which transfers loads directly to the soil. Got an idea what is meant by footing? Okay, this is footing. Now coming to foundation, then what is, if it is footing, then what is foundation? Foundation is that part of the structure which is in direct contact with and transmits load to the ground. सो व्हाट इज द फाउंडेशन देन? ये सब बेसिक आपको क्लियर है ना? थोड़ा लेट होने तो कोई बात नहीं. A foundation is that part of the structure which is in direct contact with and transmits direct loads to the ground. मतलब देखिए ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है ग्राउंड के, और ये सारा फाउंडेशन है. फाउंडेशन में फुटिंग कंस्ट्रक्शन कराओ किया हुआ रहता है, वो हम करते हैं. लेकिन ये जो फुटिंग को पकड़ के, सॉइल को पकड़ के, ये जो और एक्स्ट्रा सॉइल भी है जो नीचे है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फाउंडेशन. फाउंडेशन इज totally load will be transferred by it, but the thing is footing is portion of foundation. देखिए फुटिंग हम अब यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब गांव में जो कच्चे दीवारें रहते, वहां क्या करते, देखो आप नीचे दीवार के नीचे खोदने के बाद बोल्डर्स डाल देते, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के डालते, कीचड़ उछाल के डाल देते उसमें. सो वहां फुटिंग तो है नहीं, बट जस्ट इट वर्क्स लाइक अ फुटिंग ओनली. So that is a part of foundation. So same thing we construct here, RCC part, that is foundation. That is for footing. उसके बाद ये जो combined लिया है, it is foundation. Now I hope you are very much clear with what is footing and what is foundation. अब वो क्लियर होना चाहिए फाउंडेशन क्या है और फुटिंग क्या है, और हम डिटेल में इस सेमेस्टर में फाउंडेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर दैट वन अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू मेक इट, एज नाउ आई एम द सीसी ऑफ ए सेक्शन. Of course, Bagal Madam is CC of B section. So from tomorrow onwards, daily up to 19th, 2 hours, there will be training session. Please attend it.
Attendance is very compulsory. We have sent already you the forms in the WhatsApp group. Please complete those all formalities. You submit it, and one WhatsApp group is there. For that also link has been sent by Bagal madam. तो आप उस लिंक को भी क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. कल से मेरे ख्याल से सुबह 1 घंटा क्लास चलेगा और दोपहर में 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, जो भी वट एवर द मैनेजमेंट HOD डिसाइड्स. सो बीच में आपको 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन रहेगा. ये ट्रेनिंग सेशन सबको कंपलसरी है. जो अब तक नहीं भरे, अब तक वो फॉर्म नहीं भरे, प्लीज प्लीज उसको कंप्लीट करो. अपने सारे दोस्तों को बोल दो, अदरवाइज देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस. लास्ट टाइम इट वाज टोटली कोरोना अफेक्टेड टाइम, देयरफॉर आपको बहुत से सहूलियतें मिले. दिस टाइम इट मे नॉट बी सो. सो व्हाटएवर द थिंग्स हैज बीन आस्क्ड यू टू डू, प्लीज डू इट. तो मैं आपको फिर बताता हूँ, एज ए सीसी प्लीज फिल दोज फॉर्म्स ट्रेनिंग के जो अब तक नहीं भरे, जल्दी से भरो. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सिलेबस. Foundation soil. What is foundation soil? It is the upper part of the earth mass carrying the load of the structure. मतलब अर्थ मास का जो अपर पोर्शन है, यहां पर जो सबसे ऊपर सॉइल है, that is called foundation soil, and this soil plays a very 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 important role. देखिए यहाँ पर जो अपर पोर्शन है वो मैटर करता. इसके नीचे आपको ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर मजबूत है और नीचे वीक है, लेकिन आपको जब तक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिलता तब तक नीचे जाना ही पड़ेगा. That upper portion soil is called what it is called? It is called foundation soil. Now the next question arises, what is bearing capacity? What is bearing capacity? So the supporting power of a soil or rock is referred to as its bearing capacity. This is very 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 important term. तो मतलब आप किसी भी सॉइल को ले लो, उस सॉइल का जो सपोर्टिंग पावर है, सपोर्टिंग अब जो पावर है सॉइल का, इट इज कॉल्ड एज बेयरिंग कैपेसिटी. द सपोर्टिंग पावर ऑफ अ सॉइल और रॉक इज रेफर्ड टू एज इट्स बेयरिंग कैपेसिटी. मतलब इस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी हाई है तो दैट विल सपोर्ट द सुपरस्ट्रक्चर. सपोज अगर उसका बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो द सॉइल इज गोइंग टू फेल. मतलब हर आदमी का जैसा एक एबिलिटी रहता, उसका वेट बोलते हैं हम, वैसा पावर जो है उसका सॉइल का सपोर्टिंग पावर जो है रॉक या सॉइल व्हाट एवर इट इज इन द फाउंडेशन, इट इज कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी. इट इज कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी. Just a minute, I'm having some throat problem. Let me take water. Okay, so now next point is what is gross pressure intensity. See, all these definitions are very 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 important. You may get confused here, so once again I'm writing here, what is gross pressure intensity.
Okay, next is gross pressure intensity. It is denoted by small q. Gross pressure intensity. The gross pressure intensity Q is the total pressure at the base of the footing due to the weight of the superstructure, self weight of the footing and the weight of the earth fill if any. एक बार और पढ़ता हूँ देखिए. You should have the thing. You should have the this thing should be very clear. What is gross pressure intensity, what is net pressure intensity, what is different types of net pressure intensity, ultimate bearing capacity, ये सब आपको कंफ्यूज, सब सेम लगते लेकिन ऐसा नहीं है. तो सबसे पहले मैं आपको एक एक अभी जरा स्लो होने दो. See in the beginning, no no hurry in completing the syllabus. आपको just starting का जरा बेसिक आइडिया अपने आप क्लियर हो तो आगे आप खुद पढ़ सकते. So what is gross pressure intensity then? तो मैं आपको क्या बोला मालूम है, ये है आपका एक फिगर, ये सुपरस्ट्रक्चर है, ये इसका फाउंडेशन है, ये इसमें फुटिंग है. ओके, ये फुटिंग कभी लंबा भी रह सकता है ऐसा. तो ये फुटिंग में है, इसके बेस में है ना फुटिंग के. अब इस पे क्या क्या लोड्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. First is weight of superstructure. That's the first thing. What is the second thing? Weight of footing also. Footing का अपना भी तो self weight रहता. तो weight of superstructure, weight of footing. Then apart from this, there is some earth fill here. कैसे footing नहीं रहता तो यहाँ पर सब मिट्टी रहता था पहले. तो इस मिट्टी के वजह से भी यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर आता. एंड रिमेंबर दिस इज गिवन बाय गामा इनटू डी. अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़े? सपोज करो एक हाइट है h, वन हाइट इज देयर. प्राजक्ता, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आई थिंक नेटवर्क, इट इज बिकॉज आई एम हैविंग सम थ्रोट प्रॉब्लम. That is why I am going very slow. मैं आपको most of the things I will repeat. It is better than yesterday's. Most possibly कल तक मेरी आवाज अच्छी हो जाएगी. हो सकता है शायद उसके लिए प्रोजेक्ट इट इज नॉट क्लियर. थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे. ओके, सो नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि इस जगह पर ये सुपरस्ट्रक्चर है, ये फुटिंग है. तो ये फुटिंग के साथ में सॉइल रहता. मैं क्या बता रहा था आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते, अगर से हाइट ऑफ वाटर एच है समझो, तो उसका प्रेशर कितना होता मालूम है आपको? प्रेशर हेड दैट इज P is equal to W into H, isn't it? What is the W here? W is specific weight into height of water. Specific weight into height of water. तो उसी तरह यहाँ पर अगर से सॉइल है और उसका हाइट h है, सॉइल है और उसका हाइट h है, तो बिकॉज ऑफ दैट वन द प्रेशर इज गिवन बाय गामा इनटू h, वेयर गामा इज यूनिट वेट. तो यहां पर फुटिंग ऑफ द बेस पर तीन लोड्स आते. कौन कौन से आते? ये एक आता वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर. सुपरस्ट्रक्चर मतलब हर चीज आ गया, स्लैब, बीम, दीवार, beams, खिड़की, doors, whatever it is, that is totally weight of superstructure. Weight of superstructure के बाद weight of footing. Weight of superstructure के बाद नीचे जो है weight of footing रहता. तो this weight of superstructure plus weight of footing, फिर क्या रहता? यहाँ जो soil रहता, उस सॉइल की वजह से भी वेट आता. इट इज ओवरबर्डन प्रेशर गामा एच. तो इन तीनों प्रेशर की वजह से जो टोटल प्रेशर बनता बेस ऑफ द फुटिंग में, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर intensity. I can understand my voice is not that much clear today, but anyway I have to carry on the things. Most of the things I will repeat tomorrow again. Okay, one more notice. Once again I will remind you, please whatever the instructions are given by concerned CC, by me for A section, by Bagal madam for B section, please follow it regularly.
tomorrow onwards 11:30 to 1:30, 2 hours important training session is there, which is very much useful for you people, which is very much useful for you people. So, and it is compulsory also. Its attendance will be maintained in the record. So अभी मैं लिंक भेज चुका हूं, जल्दी से उसमें उसको उस लिंक में फॉर्म भर दीजिए. उसके बाद एक और लिंक दिया हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ऐड हो जाइए आप. दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी, प्लीज. ओके. नाउ मैं आपको क्या बोल रहा था कि ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है. तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग. किसकी वजह से? तीन चीजों की वजह से. कौन कौन से तीन चीजें हैं? फर्स्ट इज वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, सेकेंड वेट ऑफ फुटिंग, एंड थर्ड इज यहां पर जो सॉइल की वजह से ओवरबर्डन प्रेशर आता. सो इन तीनों को ऐड करने पे टोटल प्रेशर जो बनता बेस ऑफ द फुटिंग, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर intensity. It is called gross pressure intensity, and it is denoted by small q. Gross pressure intensity is denoted by small q. The gross pressure intensity q is the total pressure at the base of the footing due to the weight of the superstructure, self weight of the footing, and the weight of the earth fill if any. So the total pressure because of superstructure, because of footing, and because of the overburden pressure आता, it is called gross pressure intensity, and it is denoted by small q. It is denoted by small q. Now, I think what you must be very much clear what is footing, what is foundation, what is foundation soil, what is bearing capacity, what is gross pressure intensity. And gross pressure intensity is denoted by small q. Gross pressure intensity is denoted by small q. Now next is net pressure intensity. Net pressure intensity. Then what is net pressure intensity? It is defined as the excess pressure or the difference in intensities of the gross pressure after the construction of the structure and the original overburden pressure. देखिए क्या है नेट प्रेशर इंटेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय QN. ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है, रट के याद मत रखो इसको. इसका मीनिंग क्या है देख लो पहले. ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी तो क्लियर है, ये दो ही पढ़ो आप. एक दिन में सब पढ़ने की जरूरत नहीं, हर चीज वेरी क्लियर है ना आपको. ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी मतलब क्या है? टोटल प्रेशर किसकी वजह से? सुपरस्ट्रक्चर की वजह से, फुटिंग की वजह से, और ओवरबर्डन प्रेशर जो रहता है उसकी वजह से. अब नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? नेट प्रेशर इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय QN. It is defined as the excess pressure or the difference in intensities of the gross pressure after the construction of the structure and the original overburden pressure. इसका मतलब क्या है? हम शुरू में क्या करें ग्रॉस प्रेशर में, यहां पर ये फुटिंग का वेट भी लिए, लेकिन फुटिंग से पहले यहां पर सॉइल रहता और उस सॉइल की वजह से भी because of that soil also overburden pressure is going to be there. So that pressure minus the gross pressure after the construction. What is the gross pressure? इन दोनों का difference जो है उसको बोलते net pressure intensity. And net pressure intensity is denoted by QN, and it is given by QN is equal to Q minus sigma bar और Q minus sigma bar minus gamma into D. Qn is equal to Q minus gamma into D. So this is called net pressure intensity, and net pressure intensity is denoted by Qn. is denoted by QN. QN क्या है देखिए, पहले हम सुपर ये फुटिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या होता था? फुटिंग कंस्ट्रक्शन पहले करने से आप पूरा मिट्टी रहता था, तो ये जो प्रेशर है ओवरबर्डन प्रेशर माइनस
अब जो हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी आ रहा, ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको बोलते नेट प्रेशर इंटेंसिटी। तो ये बहुत सिंपल है, फुटिंग की जगह जो ओवरबोर्डन प्रेशर कंसिडर कर रहे थे हम उसको माइनस कर दो, तो टोटल ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी कितना है, क्यू है, उसमें से ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर गामा डी माइनस करो, सो दैट इज कॉल्ड नेट प्रेशर इंटेंसिटी। That is called net pressure intensity. Net pressure intensity is nothing but Qn is equal to Q minus gamma D. Qn is equal to Q minus gamma D. So gamma D is जो ये रहता पहले, अब इतना उस माइनस करें। ओके गोसावी, यू सी, कोई बात नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर जो है हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, समझो पहले हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले फुटिंग कंस्ट्रक्शन करते फाउंडेशन में। तो सपोज करो ये फुटिंग नहीं है, जब फुटिंग नहीं है तो वहां क्या रहता, सारा सॉइल रहता, पता कर रहे आप, सॉइल रहता नहीं। अब ये सॉइल के बाद हम क्या करते, फुटिंग लेते, तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी मतलब क्या होता, सुपरस्ट्रक्चर का वेट, फुटिंग का वेट, और ये जो बचा हुआ साइड में है हम ये जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो भी ऐड करते। लेकिन अगर से हम ये फुटिंग नहीं रहता तो यहां पर गामा डी रहता, तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में से ये गामा और डी को माइनस करो, उसको बोलते नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ग्रॉस प्रेशर में और नेट प्रेशर में फर्क क्या है, ग्रॉस प्रेशर मतलब हम सुपरस्ट्रक्चर भी लेते, फुटिंग भी लेते और ये गामा डी भी लेते। लेकिन नेट प्रेशर इंटेंसिटी में क्या बोलता हूं, जब आप फुटिंग कंसीडर करें तो गामा डी क्यों ले रहे, फिर तो गामा डी को कंसीडर नहीं करते, उतना सब्ट्रैक्ट करते, दैट इज द डिफरेंस एंड इट इज कॉल्ड नेट प्रेशर इंटेंसिटी। इट इज कॉल्ड नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ यू टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 minutes. After that, I will once again